If you appreciate my efforts, then subscribe my channel, and for video notification, please click the bell icon. हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज की जो मेहंदी की डिज़ाइन है वो बहुत छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी मेहंदी की डिज़ाइन है जो हम पार्टियों में, संगीत में लगा सकते हैं। एक्चुअली मेरा स्केड्यूल बहुत ही हेक्टिक और टाइट है अगले हफ्ते तक, तो मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत ही कम समय मिल रहा है। तो जो भी समय मुझे मिलता है उसको उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके मैं आप लोगों के लिए कोई भी डिज़ाइन बनाने की कोशिश डेफिनेटली करती हूँ और वीडियो अपलोड करने की कोशिश भी डेफिनेटली करती हूँ। तो अगले हफ्ते तक थोड़ी ऐसी सिंपल डिज़ाइन ही मैं अपलोड कर पाऊँगी और इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। एक बार मेरा स्केड्यूल थोड़ा फ्री हो जाएगा, उसके बाद मैं ट्यूटोरियल वीडियोस वापस अपलोड करना शुरू कर दूँगी। तो आई होप आप लोगों को ये सिंपल वाली डिज़ाइन भी उतनी ही खूबसूरत लगेगी। Hello everyone, today's mehndi design is a very simple party style mehndi design that we usually do during sangeet party, mehndi parties or any festival season. Because nowadays I have a very hectic schedule, and because of that I can take out very little time for my recording my videos, and due to that I am only able to upload this kind of simple mehndi design, and I am really sorry for that. Once I will have enough time, I will again start creating tutorial videos, the elaborated design videos, and till next week I have this hectic schedule, so I am really sorry for that, and I hope you all would love this simple mehndi design too. And stay blessed, stay inspired, take care everyone. We will see you again very soon with so many other videos, and I have one question answer videos also in planning. So if you have any questions, do ask all the questions through comment, and I will definitely answer them. मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो करने का भी प्लान कर रही हूँ, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप डेफिनेटली कमेंट के ज़रिए मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं वो उस वीडियो में क्वेश्चन आंसर वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगी। तो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, थैंक यू, बाय बाय।